Hello dear students, hope you all are doing well in your study. Dear students, in today I am going to discuss with you the question answer of the chapter Ranga's Marriage. I have already discussed with you the summary and other details of the chapter, right? I hope you people have seen. If you have not seen, you can see in the playlist of my channel class 11, right? वहाँ पे आपको मिल जाएगा Ranga's Marriage का detail explanation and all the essential things related to the chapter I have already discussed. तो आप उसको जरूर देखें before seeing this वीडियो, बिकॉज अगर आपने उसको देख लिया तो आपको ये वीडियो जो है, ये जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, द क्वेश्चन आंसर विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? तो आई होप कि आप उससे जरूर देखें. अगर आपने उससे देख लिया तो देयर इज नो इशू. नाउ यू कैन वॉच दिस. You are going to, I am giving you multiple questions from this chapter. Actually this chapter is very interesting as I told you. So from this chapter many questions can be created. ये बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ से क्वेश्चंस को क्रिएट किया जा सकता है. One more thing I would like to suggest you that these questions which are given in a book, don't think that the questions which are given in a book that only are going to come in the paper of your class, whether in school, whether it is made by the school teacher only, right? So the question can be created from any point of view from the chapter by the teacher. So you must be ready for giving the answer. You cannot say that this question has not been given in the book and I cannot attempt it. So that's why I'm having lots of questions for you. I'm going to show you. You will enjoy this. So let's go ahead and just enjoy the question. And why I'm saying enjoy the question, my dear, अगर आप किसी भी वर्क को enjoy करके कर नहीं लेंगे, उसको अगर बोरिंग या इरिटेटिंग या आपको ऐसे लेंगे कि ये बहुत ही बर्डन है, तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे और उस काम को नहीं कर पाएंगे. तो प्लीज़ whenever you are studying, whenever whatever you are preparing, whether it is English or any other subject, just think that you are enjoying. और जब आप इंजॉइंग करेंगे, जब आप इंजॉय करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, आप थकते नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर प्लेइंग गेम, यू गेट टायर्ड? नो. आप प्ले कर रहे हैं हाफ एन आवर, 2 आवर, 3 आवर, होल डे खेलते रहते हो बट थकते नहीं हो. रात में तुमको फील होता है यस आई एम टायर्ड, बट इन डे ड्यूरिंग द गेम यू आर नॉट टायर्ड. So same way if you are preparing, you just keep thinking yes I am enjoying. So here is the chapter here, Ranga's Marriage. I have already discussed. आज मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. Already I have told you about the author. So I am going to take you. It is just the same slide I am having. And short summary I have given you detailed summary. So here is short summary also. I have already told. तो मैं आज नहीं बताऊंगा इसको. मैं सीधा क्वेश्चन के पास चलता हूँ. कंक्लूजन भी था इसमें, मैंने डिस्कस किया था. अब आ गए हम क्वेश्चन के बारे में. चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है और क्या किस तरह के क्वेश्चन दर भी इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड इन द चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट खुशहाली? नरेटर खुशहाली के बारे में क्या बताता है, मतलब अपने विलेज के बारे में क्या बताता है. राइटर टेल्स मेनी थिंग्स about the खुशहाली. What he say that my village is very good, it is located between Mysore and Bangalore. Geographical condition बहुत ही अच्छी है और climate is very good, plus नेचुरल सिनारियो इज वेरी, मैंगो इज वेरी गुड. मतलब बहुत सारी चीज़ें बताता है. क्या कुछ लिखा है यहाँ पे उसको देख लेते हैं. सी खुशहाली विलेज, राइटर टेल्स दैट खुशहाली विलेज इज द सीन ऑफ एक्शन. सीन ऑफ एक्शन मतलब बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पे होती रहती हैं. देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन द ज्योग्राफी बुक्स. और वह चीज़ और बताता है कि दैट खुशहाली माई विलेज इज, यू कैनॉट फाइंड इट इन ज्योग्राफी बुक और एनी मैप, राइट? क्यों? बुक्स रिटन बाय द साहिब्स इन इंग्लैंड. मतलब देखो कि ये कमेंट है एक तरह से कि एक्चुअली देखो जब मैप, स्टार्टिंग मैप हैज बीन मेड इन द फॉरेन कंट्री बाय द फॉरेनर्स, इसलिए वहाँ पे इंग्लैंड मेंशन किया हुआ है. एज वेल और इंडियन राइटर और इंडियन मैप कार्टोग्राफर जो मेक द मैप, उन्होंने हमारे विलेज को मेंशन नहीं किया है. ऐसा कौन बताता है? राइटर. नो कार्टोग्राफी हैज पुट इट ऑन द मैप. मीन्स राइटर कंप्लेन कर रहा है, एक तरह से कंप्लेन है राइटर की, उसने उसके विलेज को मैप पे हाईलाइट नहीं किया. द नरेटर हाईलाइट्स इम्पोर्टेंट बाई कंपेयरिंग इट्स टू फीलिंग ऑफ द कारिगा डुबू फेस्टिवल मील. और क्या बताता है वो, कंपेयर करता है कि एक मील है, एक फेस्टिवल होता है उसमें एक मील बनता है, उसका नाम कारिगा डुबू है, उससे कंपेयर करता है. मतलब ये जो मील है बहुत ही बेहतरीन होता है, डिलीशियस होता है, इसलिए इसका जो विलेज है वो भी क्या है, बहुत ही फैंटास्टिक और वेरी नाइस है. You can add some other things also regarding that. He tell about the mango that in his village you can get raw mango. बहुत ही sour taste होता है, right? And this is a special kind of mango जिसको खाने के बाद you can have a cough problem also. तो ये सारी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं.
See, what are the two specials produce of the होशाहाली and in what respect? दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या प्रोड्यूस होती हैं होशाहाली में, वो मैंने जो ऊपर बताया वहाँ पे देखिए. फर्स्ट इज द रा मैंगो, द श्योरनेस ऑफ द इट्स बाइट इज श्योर टू गेट स्ट्रेट टू द ब्रह्मांड. ये बोलता है कि हमारे विलेज में होशाहाली में एक स्पेशल काइंड ऑफ मैंगो है होता है जो उसको आपको खाने के बाद बट यू हैव शोर प्रॉब्लम, सॉरी यू विल हैव थॉट प्रॉब्लम. कब की प्रॉब्लम हो जाएगी? वेट अ सेकंड, लेट मी लिटिल वाटर. You will face problem of cough, he told writer. And one more thing, he said that the soreness, it is so, no, it is too sore that it will directly hit to your mind. मतलब अगर जैसे ही आप खाओगे उसका फ्लेवर जो है, ठीक है, वो आपके तुरंत दिमाग माइंड तक पहुंच जाएगा. The soft part in the child head was skulls, bones join later. And second specialist is a creeper ग्रोइंग इन द वाटर ऑफ द विलेज. और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वो बताता है क्रीपर प्लांट है जो पानी में वहाँ पे उनके विलेज में ग्रो करता है इन द पॉन्ड. इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड एंड यू कैन सर्व आफ्टरनून मील. और उसका जो क्रीपर जो प्लांट है उसके जो लीफ होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं एंड यू कैन सर्व योर फैमिली फूड आल्सो इन दैट. ठीक है, और आपको पता है यू नो दैट इन साउथ इंडिया एंड अदर इन दैट डायरेक्शन पीपल यूज टू टेक द फूड ऑन द लीफ ओनली. सो दिस इज द वन. Second thing, what exactly had happened 10 years ago and how important was it then? क्या क्वेश्चन क्या है कि 10 साल पहले क्या हुआ था, आपको याद है? Do you remember? I have told you 10 years ago what happened. There were not many people in the village speaking English or they were knowing English. गाँव में इंग्लिश बोलने और जानने वालों की संख्या क्या थी? काउंटेड थी. The village accountant was the first one who sent his son Ranga's to Bangalore to pursue his study. And this is Ranga, who is the son of accountant, has been sent Bangalore for study, and it was quite an important even then. और उस समय क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही गर्व और प्राइड की बात थी that someone has sent his son. So the narrator highlighted this by saying that the village accountant was the first one who had enough courage to send his son to the Bangalore to study. Right? Next, देखिए what happened when Ranga returned. Simple thing, Ranga house was gathered, surrounded by the people in the village. The people came to see and observe and check Ranga, how much he's changed and how he is actually, right? For this he came and see Ranga homecoming was a great event. ठीक है, the crowd miled around his house to see whether he had changed or not. मैंने बताया कि रंगा चेंज हो चुका है कि नहीं हो चुका है, चेक करने के लिए आए. People were quite excited as the boy was returning from home after studying English at Bangalore. ठीक है, everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago, and everybody was surprised. सबको चेक किया, सब लोगों ने देखा और उन्होंने क्या पाया? Ranga was same. He is having all the manners, all the ethics, and he was physically also the same when he had first left the village. जो जैसा ही था, जैसा वो विलेज के जब छोड़ा था उस समय था, उसी तरह वो आने के बाद भी था 6 months. How did the old lady satisfy herself about Ranga? आप देखो जो एक ओल्ड लेडी है वो क्या करती है, वो रंगा का हॉली थ्रेड चेक करती है ना, to check to find that Ranga is same. So the old lady ran her hand over Ranga's chest and she looked into his eyes and she was satisfied to find that sacred thread. Sacred thread का मैंने बताया था, it's Geneva, it is in Hindu mythology, in Hindu religion people used to wear sacred thread on his body, and she was happy that had not lost his caste. और उसको देखने के बाद वो महिला क्या होती है, खुश हो जाती है कि रंगा ने अपनी एथिक्स, अपनी मैनर, अपनी कल्चर्स को नहीं खोया. What has happened is disgraceful, believe me, says the narrator. What does he refer and what does he illustrate his point of view? अब इस क्वेश्चन में पता है क्या पूछ रहा है, आप स्टार्टिंग में ये पॉइंट आता है कि it was disgraceful. Actually, you know, once writer was in the village and a child had spoken something, right? राइटर को ही समझ में नहीं आता, तो वो वही क्वेश्चन है. देखो इसका आंसर क्या दिया हुआ. द लेटर रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ यंग पर्सन हु ड्यूरिंग द हॉलीडेज इन विलेज go on talking in English or bringing in English words while talking in Kannada. क्या है, राइटर ये बताता है कि 10 years before उसके गांव में लोग they usually speak Kannada, but during while speaking Kannada they also speak English. कुछ words यूज करते हैं. He calls this mixing up of language, ठीक, disgraceful. ठीक है. He gives the example of the use of the English word change to an illustrate person. The old lady, being asked to come the next day, went away disgruntled. ठीक है. अगला देखिए क्या है. What does the narrator refers to the black hole of the Calcutta? Black hole of the Calcutta किसको रिफर करता है?
स्टोरी में एक जगह वो कंपेयर करता है ना ब्लैक होल ऑफ द कलकत्ता, वो जो गैदरिंग होती है देखो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हंड्रेड्स ऑफ द पर्सन्स वर kept inside a single room. The next morning, most of them were found dead due to suffocation. The narrator uses the expression black hole of the Calcutta to suggest that large number of people who had turned out to see Ranga's house at his Ranga house. ठीक है, बहुत सारे लोग 100+ पीपल गैदर हो जाते हैं रंगा के घर के सामने उनको देखने के लिए, तो उस कंडीशन कैसी हो जाती है, ब्लैक होल वाली हो जाती है, बहुत सारे लोग कम स्पेस में. हाउ डिड रंगा ग्रीट द नरेटर? इन वॉट रिस्पेक्ट डिड ही डिफर फ्रॉम द प्रेजेंट डे बॉयज? क्या क्वेश्चन है, रंगा कैसे राइटर को ग्रेड करता है और वो दूसरे बच्चों से, प्रेजेंट टाइम के बच्चों से कैसे डिफरेंट है? ही टच द फीट, ही बो डाउन एंड टच द फीट. देखिए क्या लिखा है, रंगा ग्रेटेड द नरेटर विद द फुल डिवोशन. He not only folded his hand but also bent low, touched his feet. The present day boy would stand stiff like a pole, I told you, without joint, keep hands towards the sun and jerk his body as if it were either hand or a walking stick. The narrator, being old-fashioned, did not approve it. क्या होता है प्रेजेंट टाइम में, हम देखते कहीं और, हम किसी को ग्रेट या नमस्ते करते हैं कहीं और. मतलब आप देख रहे हो कि नॉर्थ साइड में और आप विश कर रहे हो किसी को साउथ साइड में, अभी प्रेजेंट में ही हो रहा है. वन मोर थिंग हैपनिंग इन प्रेजेंट. अब देखो पहले हम फीट को टच करते थे, अब हम नी को टच कर रहे हैं. अब ऐसा भी मॉडिफाई हो गया ये मॉडर्न सिस्टम में, लोग झुकना ही नहीं चाहते. तो दिस इज द थिंग एंड दिस थिंग राइटर डिड नॉट लाइक. व्हेन डिड रंगा प्लान्स टू मैरी एंड वाई? देखो रंगा कब शादी करना चाहता है और कब, क्यों? देखो रंगा डिड नॉट वांट टू गेट मैरी एंड अर्ली एज. ही वांटेड टू फाइंड द राइट गर्ल एंड शी शुड बी मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड हिज लव टर्म. सेकेंडली, मतलब रंगा तो इमीडिएटली शादी नहीं करना चाहता. ही वांटेड दैट ही शुड बी सो मैच्योर, मतलब मैच्योर है ना, and so he should get a good girl so that then he could plan to marry. He used to marry a girl he admired and he used to marry, मतलब वो चाहता है कि वो ऐसी लड़की शादी करे जो उसको अप्रोक्स हो, उसकी एज पैरेलल हो. and he was against marrying quite young girl and he did not want to marry a girl under his age who had no manner or were not careful of their face or features. Okay, अगला देखिए, व्हाट एग्जांपल्स डिड रंगा गिव टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिंग लेट. अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रंगा क्या एग्जांपल देता है लेट मैरिज करने का. सी रंगा गिव्स टू एग्जांपल एन ऑफिसर, वो ऑफिसर वाला एग्जांपल देता है. अबाउट 30 गेट मैरिड ए गर्ल ऑफ 25. रंगा होप दैट दे वुड बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर. दे शुड द सेकेंड एग्जाम्पल. पहले में क्या वो सोचता है कि अगर अंडर एज गर्ल से आप शादी कर लेगा कोई, so the girl will talk to him very lovingly and properly, but there is a problem if the husband scold him, suppose, then what will happen, then also she will think that he is talking very lovingly. ये problem है अंडर एज वाले में. The second example is that of, ठीक है, दुष्यंत falling in love with शकुंतला who was quite mature. अब दूसरे में क्या है, दुष्यंत कम एज का था और शकुंतला हाई एज की थी, और यहाँ पे भी क्या डिफरेंट हो जाता है. तो ये दो एग्जाम्पल वो देता है. रंगाज, ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है, ठीक है. रंगाज वाज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, से द नरेटर. एक्चुअली देखो नरेटर क्या कहता है, जब मोमेंट नरेटर सा रंगा, ही फाउंड दैट रंगा इज ए वेरी गुड गाय, गुड बॉय एंड ही शुड गेट मैरी विद रत्ना एंड रत्ना इज फिट फॉर रत्ना. हु इज सी मतलब वही रत्ना की बात हो रही है. व्हाट लेड नरेटर टू दिस कंक्लूजन? सी रिफर्स, सी स्टैंड फॉर रत्ना, द नीज ऑफ रामाराव, आई टोल्ड यू. She was pretty girl of 11. Both her parents have died. मैंने बताया था आपको when I was explaining you that Ratna had lost her father and mother. Both her uncle had brought her home, being a girl from a big town, and she knew how to play the veena and harmonium. रत्ना कहाँ रहती थी? वो सिटी में रहती थी, टाउन में रहती थी. वहाँ से वो आ जाती है चाली अपने अंकल के पास, और she knew how to play veena and harmonium. She also had a sweet voice, and all these qualities made her suitable bride फॉर ए यंग एजुकेटेड मैन लाइक रंगा. ये सारी क्वालिटी जो रत्ना की है वो रंगा की वो फिट बना देती है रत्ना को फॉर रंगा. ठीक. हाउ डिड नरेटर लेट रंगा हैव ग्लिम्प्सेस ऑफ रत्ना? अब देखो ये क्वेश्चन ये कहाँ से कनेक्ट कर रहा है, कब राइटर ने रंगा को रत्ना से मिलाया या कब रंगा ने रत्ना को देखा? वो वही टाइम है जब देखो द नरेटर अरेंज द मीटिंग वेरी सिस्टमैटिकली. फर्स्टली ही कॉल्ड रत्ना ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेंडिंग बटर मिल्क देने के लिए अपने घर बुलाता है कौन, राइटर. एंड एट द सेम टाइम ही आस्क्ड हर टू सिंग अ सॉन्ग. मेनवाइल रंगा whom he had sent for, मतलब रंगा को भी उसने बुला रखा था,
reach the door and he becomes curious to see the singer and peeped in. Common thing है, रंगा भी पहुंच गया, रत्ना already वहाँ पे थी and she was singing the song and Ranga got a chance to meet Ratna and Ratna also got a chance to meet Ranga. His presence at the door blocked the light and Ratna stopped singing abruptly. और जैसे वो आता है रत्ना गाना बंद कर देती है. And this is the time when Ranga and Ratna meet and this is whole meeting is planned by writer only. Next देखो how did Ranga and Ratna react at their अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर. जब रंगा और रत्ना मिलते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं. रत्ना स्टॉप सिंगिंग एब्रप्टली ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर आउटसाइड. कॉमन थिंग है, सपोज यू आर डांसिंग, सपोज यू आर सिंगिंग, सडनली एनीबॉडी कम, यू स्टॉप. नेचुरल थिंग है, कोई भी कर देगा. सो रंगा फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन द सिंगिंग स्टॉप एंड रंगा फेल्ट डिसअपॉइंटेड क्योंकि रंगा वांटेड टू लिसन रत्ना. ठीक है, रत्ना स्टूड एट द डिस्टेंस विथ हर हेड लोअर्ड. और रत्ना स्टूड थी, साइलेंट थी, खड़ी थी. और रंगा रिपीटेडली ग्लांस एट हर. रंगा उसको देख रहा था एंड ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द सिंगिंग टू स्टॉप एंड ऑफर्ड टू लीव. एंड रंगा सेड टू राइटर दैट आई थिंक आई interrupted you Ratna from singing, so I am going. Ranga requested writer for leaving, but Ratna was overcome by the shyness and she ran inside. Ranga, after that what happened, Ratna went inside the room. Ranga inquired about her. और रंगा क्या करता है, राइटर से पूछता है who is that girl and what is her name. How did the narrator handle Ranga's inquiry about Ratna. अब जब रत्ना अंदर चली जाती तो रंगा क्या करता है, रंगा asks some question, what's her name, who is she, to the writer. Then writer कैसे reply करता है, see the narrator did not give him a straightforward reply. Really, writer did not told Ranga that who is she. Writer just tried to circulate. He said casually that it did not matter to the either of them both who she was. क्या कहता है कि ये तो कोई मतलब नहीं उसके बारे में जानने का. उसको कहता है रंगा को, राइटर. क्यों ऐसा कहता है, देखो. द नरेटर वाज ऑलरेडी मैरिड. द नरेटर का मतलब, नरेटर खुद को कहता है आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड रंगा वाज नॉट टू द मैरिंग टाइप. मीन्स राइटर कहता है कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है रंगा और तुम्हारा दिमाग में मैरिज करने का कोई प्लान नहीं, तो दे नो नीड टू नो अबाउट रत्ना. दिस अराउज रंगास इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट. और जैसे ही राइटर ये बोलता है, रंगास की माइंड में क्या होता है, सब केम सम आइडिया. ही एक्सप्रेस द होप दैट शी वाज अनमैरिड. और रंगास See his face showed sign of disappointed on learning that, and रंगा ये एक्सपेक्ट करता है कि रत्ना क्या होगी, अनमैरिड होगी. और जब उसको राइटर बताता है that she is married, एक्चुअली रत्ना मैरिज नहीं थी, फिर भी राइटर फेक बोल देता है, लाई झूठ बोलता है रंगा से कि वो मैरिड है. तो रत्ना का रंगा का जो फेस है वो क्या होता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, सैड हो जाता है. व्हाई डिड नरेटर टेल रंगा दैट द गर्ल वाज मैरिड अ ईयर एगो. अब यही बात ऊपर हमने डिस्कस किया. बिकॉज राइटर वांट टू चेक व्हाट फीलिंग रंगा हैव अबाउट रत्ना आफ्टर सीइंग हर. देखो, नरेटर हैड मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड गेट रंगा मैरिड. उसको एग्री करना था रंगा को फॉर द मैरिंग रत्ना. First he brought Ranga and Ratna face to face to arouse his interest in her in order to test the strength of his emotion. तो रंगा का इमोशनल टच, इमोशनल फीलिंग टुवर्ड्स रत्ना ही राइटर वांटेड टू चेक. इसलिए उसको बोलता ही टोल्ड रंगा दैट शी वाज मैरिड अ ईयर एगो एंड दिस शिवर्ड फेस ऑफ द यंग मैन बिट्रायड हिज फीलिंग. और फिर क्या होता है, जैसे ही राइटर उसको बोलता है रंगा गॉट मैरिड 1 year बिफोर, तो रत्ना गॉट मैरिड 1 year बिफोर, तो क्या होता है, रंगा का जो फेस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, सैड हो जाता है. व्हाई डिड नरेटर विजिट द विलेज एस्ट्रोलॉजर. अब ये कौन है विलेज एस्ट्रोलॉजर, वही मिस्टर शास्त्री. क्यों जाता है आपको पता होगा अगर आपने स्टोरी देख लिया होगा तो. द नरेटर वेंट, देखो वो क्यों जाता है, बिकॉज राइटर वेंट टू द एस्ट्रोलॉजर टू टेल हिम दैट, क्या उसको बताना है रंगा को, जो वो रंगा को लेके आया था. देखो, द नरेटर वेंट टू द एक्सप्लॉइट द कॉमन ह्यूमन वीकनेस, ईगरनेस टू नो द फ्यूचर. कॉमन थिंग है, हर व्यक्ति क्या चाहता है, एवरीबडी वांट टू नो अबाउट द फ्यूचर. जब हम प्रॉब्लम में होती है हम चाहते हैं कि कहीं सोल्यूशन मिल जाए, कोई बता दे, राइट. भले ही कोई झूठ आपसे बोले कि ये ऐसा होने वाला है तो आप विश्वास कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. सो ही वेंट टू द विलेज एस्ट्रोलॉजर एंड टोल्ड हिम टू कीप रेडी टू द रीड द स्टार. ही ट्यूटर्ड हिम. ट्यूटर का मतलब राइटर ने एस्ट्रोलॉजर को बताया, शास्त्री को बताया क्या बोलना है उसको जब रंगा को लेकर वो आएगा. वांटेड द एस्ट्रोलॉजर टू से व्हेन ही वुड रिविजिट हिम विद द रंगा. अगला देखो, इन व्हाट मेंटल एंड इमोशनल स्टेट डिड द नरेटर फाइंड रंगा, व्हाट सोल्यूशन डिड ही ऑफर एंड हाउ डिड रंगा रिएक्ट टू इट. किस कंडीशन में, इन विच कंडीशन राइटर फाउंड रंगा एंड व्हाट सोल्यूशन ही ऑफर्ड टू
Ranga to do for solving his problem. देखो, Ranga seems to be lost in the thought. Common thing, Ranga को सोच रहा था, maybe about Ratna, maybe about something else. Perhaps he was emotionally upset to the learn that the girl, perhaps means probably that Ranga was thinking about Ratna that she had gone married. See, the girls he had seen in that morning was already married one, and the narrator offered to take him to Shastri. Shastri मतलब वही astrologer के पास to learn about the stars whether Guru and Sunny were favorable for him or not. Ranga accompanied him without any protest और रंगा उसके साथ चला जाता है राइटर के, वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है अबाउट हिज डिसीजन. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट ओनली आई एम लिटिल फास्टर, ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर सकें. आपको अगर फास्ट लग रहा है तो आप उसको स्लो करके आप देख सकते हैं. व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, व्हाई वाज दिस सेंटेंस कट ऑफ एंड व्हाई बाय whom, what would have been the likely impact of if speaker had completed the sentence. The narrator got angry when the astrologer said with a surprise that he had not seen the farmer for a long time. The narrator shouted these words. The astrologer cut this sentence off and completed it in his own way. If he had not done so, the narrator would have ruined their plan by blurting out everything. ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 18 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर वाज रंगाज कॉज ऑफ वरी एंड हाउ डिड द नेम ऑफ रत्ना क्रॉप अप. अब देखो कैसे बताता है एस्ट्रोलॉजर कि क्या रंगा को क्या प्रॉब्लम है. देखो, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर द कॉज ऑफ रंगाज वरी वाज द गर्ल. डायरेक्टली बताता है एस्ट्रोलॉजर कि आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, एक गर्ल है. ठीक है, सी प्रोबेबली हैड द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन. और कहता है कि जो लड़की है उसका नाम क्या होगा, मे बी समथिंग रिलेटेड विच इज फाउंड इन द ओशियन. ओशियन में क्या मिलता है. व्हेन आस्क्ड इफ इट कुड बी कमला, द एस्ट्रोलॉजर डिड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी. उसके बाद राइटर से कहता है मे बी इन द नेम कमला, तो कहता है हाँ मे बी कमला, बिकॉज कमल के फॉर कमला और के फॉर कमल कहाँ मिलता है, लोटस मिलता है पानी में, ओशियन में, एंड वाटर में भी. व्हेन सजेस्टेड इफ इट कुड बी पाची मोस, एस्ट्रोलॉजर पुट अ काउंटर क्वेश्चन, वाई नॉट पर्ल और रत्ना. फिर क्या होता है, उसके बाद 2-3 ऑप्शन और देखता है, फिर कहता है डायरेक्टली हो जाता है क्यों नहीं पर्ल और रत्ना, क्योंकि पर्ल और रत्न भी कहाँ मिलता है, ओशियन और सी में ही मिलता है. द प्रीसियस स्टोन ऑब्वियसली एंड दस द नेम ऑफ द गर्ल इज रत्ना. मतलब फाइनली घुमा फिरा के वो ले याद देता है उसको रत्ना के पास में. देयर वाज सरप्राइज ऑन द रंगाज फेस, और जैसे ही उसको बताता है एस्ट्रोलॉजर दैट गर्ल नेम इज रत्ना, रंगा सरप्राइज हो जाता है एंड सम हैप्पीनेस. व्हाट डू यू थिंक हैड कास्ट दिस फीलिंग. अब रंगा हैप्पी हो जाता है क्यों. द क्वेश्चन इज दिस. व्हेन द नरेटर लर्न फ्रॉम शास्त्री दैट एस्ट्रोलॉजर दैट द नेम ऑफ द गर्ल रंगा was worried about could be Ratna, he was at once reminded of Rama Rao since Ratna niece Ratna. ठीक है, he asked the astrologer if there was any chance of the marriage being fixed there. The astrologer gave firm assurance. This caused happiness and surprise on the Ranga's face. Actually astrologer उसको बताया, राइटर उससे पूछता है क्या कुछ चांस है कि रंगा और रत्ना की शादी हो सकती है. तो एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ. तो ये पॉइंट सुन के रंगा क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है. How did the narrator taste the sincerity of the Ranga's feeling about Ratna? Narrator Ranga's की feeling जो है रत्ना के लिए उसको कैसे टेस्ट करता है. The narrator employed the age-old trick, temptation for the unattainable. He first mentioned that the girl had been married a year ago. He noticed Ranga's disappointment. जब उसको notice करता है रंगा disappoint हो गया. Ranga's face fell when the narrator mentions to the astrologer that the Ratna was married. When he was sure of the sincerity of Ranga's feeling about Ratna, he disclosed that she was not married. जब उसको लगता है, वो श्योर हो जाता है रंगा is having some feeling, emotional feeling for Ratna, तो उसको बताता है क्या, वो रंगा को बताता है कि she actually Ratna is not married. See, there are greater truth in that Shastri than we imagine, says Ranga. What truth that he refers to and how was he made to admit it. See, after their visit to Shastri, the narrator disclosed the Ranga that Ratna was not married. He observed that whatever Shastri told them had turned out to be true. Shastri ने जो कुछ भी बताया that is true. Still, he could not believe that Ranga had been thinking of her. He asked Ranga to confirm it. Ranga frankly admitted the truth
that he was thinking of her. और finally राइटर पूछता है कि क्या तुम सच में उसके बारे में सोच रहे हो, तो रंगा क्या कहता है, हाँ, yes I was. What did the narrator tell शास्त्री about the performance? How did the शास्त्री reacted? और पता है उसके बाद राइटर मिलता है शास्त्री से और शास्त्री पूछता है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, तो देखो क्या आंसर देता है. नरेटर टोल्ड शास्त्री दैट ही रिपीटेड एवरीथिंग ही हैड टोल्ड हिम विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेंशन. ही एक्सप्लेन्ड व्हाट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज. और राइटर अप्रिशिएट करता है शास्त्री को इसके मिलने के बाद ना, जब ये हो जाता है इंसिडेंट. शास्त्री डिड नॉट लाइक हिज ratings astrologer. He retorted that he could have found out himself from the Shastra. ठीक है. Comment on the ending of the story Ranga's Marriage. आपको कमेंट देना है. अब ये छोड़ दीजिए, leave it. Now these are the short question. 24 short I have taken. So many it is, enough it is. You don't have to prepare anything extra. The best way of, अब ये कुछ लॉन्ग से देख लीजिए फटाफट, आप शॉर्ट से ही लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं. The best way of getting to the know a place is to visit it. Which place does मस्ती वेंकटेश्वर रिफर्स टू, मतलब जो राइटर रिफर करता है. व्हाट डू यू नो अबाउट दैट, वही उसका गाँव है होसाहाली के बारे में. इसका आप देख लीजिएगा, मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ. व्हाट वाज द स्पेशल्स अबाउट रंगप्पा के बारे में क्या स्पेशल है. हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्टेड टू इट, राइट. If you want PDF of this, you can write in comment section. I will send you the PDF also. Give a brief account of the narrators to meeting of the Rangas after the letter return and from Bangalore, and what opinion did he forms about the young man. ठीक है. 5 long question I have kept for you. What were the Rangas ideas about the marriage? मैरिज के बारे में क्या आइडिया था. Do you find any change in them during the course of the story. ठीक है. और लास्ट है ये, what step did the narrator take to get Ranga married to Ratna. ये पूरी स्टोरी ही ये कवर करता है. तो ये these are the question my dear. I hope it is clear to all, and this is all the question which I have taken for you, and you people have enjoyed, I hope. So thank you so much for watching my dear. See you in next video. Till then you keep watching, keep studying, and good luck. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my every